Hi Chandan, this is Gunjan from ETimes and welcome to ETimes. You have been doing great. The response is raving, and all I need to say is Japnam Swamiji. Japnam Gunjan. Thank you for having me on your show, and it's a great honor, and it's all the appreciation every actor looks for, and I've been getting amazing responses. There are so many memes which are floating around. My school friends keep sending me all these memes, which is floating around in their WhatsApp groups and family WhatsApp groups. So the reach of this show through MX and the it's just gone beyond. I think there's some 100 million people saw it in 32 hours, and it's just growing and growing. And I think it's a once in a lifetime kind of phenomenon. So yeah, it's great. I thank each and every audience who's seen it and loved Bhopa as much as I had fun making it. So I'm also one of those 32 million people because I'm a Oh, big wow, fan of Aashram series, and especially wow, your character. It has so much quirk. It has so much like there is some degree of insanity and also sane. It's sane as well. It's practical. yeah, It's just very nice whenever you're on screen. So I wanted to thank you. know, like, Bhopa Swamy is such a strong character, and I'm sure there must be a lot of preparation you must have done before, start shooting for it. So क्या preparation किया था आप लोग आपने उसके लिए? एक्चुअली मेरी सारी जो जितने भी कहानियों की रोज मैंने आज तक किए हैं इनके प्रिपेयर जो मैं करता हूँ, सबसे शुरू में तो मैंने मेरी स्क्रिप्ट से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जब मैं प्रकाश जी से मिला, हमारे डायरेक्टर, उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई, उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट मुझे सुनाया और बताया कि बॉबी सर बाबा निराला बने हैं और आप जो हैं भोपा हैं, जो पूरा आश्रम जो है आप चलाते हैं। देन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई नॉर्मली आई रीड द स्क्रिप्ट ओनली वंस and I don't read it again. I read it like a novel. I read it like a play or a fictional story, as if I'm not doing it. That's my first stage of preparation. I read the script like a story, and knowing that this is my role. So I just read the whole thing with like जैसे आप कोई भी नाटक की कहानी पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं तो सारे कहानियों में सारे इवेंट्स और सारे कैरेक्टर क्या कर रहे हैं आपको याद रहते हैं। तो मैं भी उस तरह से कहानी की तरह पढ़ के तैयारी करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ अच्छा भोपा ये है, इसने इसके साथ ये किया है। देन आई सॉर्ट ऑफ फाइंड हु इज टॉकिंग व्हाट अबाउट दिस गाय, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा है, किसके साथ इसकी दोस्ती है, किसके साथ इसकी दुश्मनी है, ये क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, इसके इसके मूड कैसा होगा, इसके मूड स्विंग्स है कि नहीं, ये सब थोड़ा थोड़ा हर कोई एक्टर करता है, आई एम श्योर। तो वो सब मैं तैयारी करता हूँ। फिर एक स्टेज आता है जब आप डायलॉग्स या अपने लिंगों पे काम करते हैं, जो इसमें उच्चारण वगैरह है, वो काम करते हैं तो आपको एक भाषा पे आपकी एक पकड़ आ जाती है। फिर आपका एक स्टेज आता है जब आपको कॉस्ट्यूम दिया जाता है, जब डायरेक्टर आपको बताता है, जो प्रकाश जी ने बताया कि आप इस लंबा सा कुर्ता पहना, आप में टीका लगा है, रुद्राक्ष है और शायद कहीं एक गन भी छुपा रखी है कहीं ना कहीं कभी। सो ये एक आता है जब मैं कपड़े पहन लेता हूँ, तब अंदर मेरा कुछ शुरू हो जाता है। आई स्टार्ट फीलिंग इट and then when you land up on set on a given day, and then other actors who are playing those characters in that story, and that's when I start interacting with them on a first day. I try to find my sur, which note I'm going to hit, and that's the first day. And the second day is when I'm trying to find the note and trying to figure out who I am, और ये हमेशा हेल्प करता है। और फिर उसके बाद जो है देन आई स्टार्ट फ्लोइंग, देन आई जस्ट come on the set, I look at my lines once, and I love improvising. A lot of things I do which Prakash ji lets me do it. It's very nice of him. So I told him, like there are villains and there are all kinds of villains, and people have played all kinds of memorable villains and great acting, great actors. But I don't want to play a villain, दो बिकॉज वो है ही वो आदमी तो चरित्र ही ऐसा है और जो चीजें कर रहा है वो ऐसे ही बुरी चीजें कर रहा है, but I want to play it like a normal human who has a little sense of humor, who has a smile on his face, he sings, he has his little beer in the evening, and a little sort of thing with his friend going on. So all those things I think collectively is what this made this character so interesting for the audience to watch.
आई थिंक। Oh yes, totally. You know, all those things are so relatable and believable. You believe in that character that हाँ ठीक है, थोड़ा बुरा भी है, but मतलब funny भी है और थोड़ा मतलब chilled out भी है. मैं आपको बताऊं, मेरे को इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में काफी लड़कियां मैसेज करके बोलती हैं, आप इतनी अच्छी गाली देते हैं भोपा जी, प्लीज एक मुझे प्लीज गाली दे के दिखाइए ना। मैं बोला यार ये किस तरह की प्रसिद्धि है, ये लो ये क्या हो रहा है, मतलब हाउ वुड लाइक ऑल दिस गर्ल्स आर मैसेजिंग लाइक ओह द वे यू सेड दैट गाली, नो माय गॉड, ऐसे मिश्री घुल गई मेरे कानों में। मैंने बोला अच्छा ओके, ये तो बड़ा ही मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो मैं उसमें गालियां दे रहा हूँ, तो इट्स दैट काइंड ऑफ रिलेशन दैट, कि गालियां भी आप इतने प्यार से देते हैं तो मजा आता है सुनने में, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा हो गया है। Yeah, I know. But मतलब इतना फैन फॉलोइंग आपका फीमेल्स में है और मतलब सीरीज में आप बिल्कुल ही ब्रह्मचारी वाला आपने वो कर रखा है. तो जी मतलब आपने बोला नहीं प्रकाश जी को कि मतलब मेरा भी कुछ भला हो जाए. हाँ, नहीं प्रकाश जी को मैंने बोला नहीं, लेकिन एक्चुअली वो आश्रम इसलिए चला पा रहा है क्योंकि बाबा निराला तो मतलब ब्रह्मचारी होने से रहे, वो सारी गलतियां वो करते हैं और सब मैं साफ करते रहता हूँ, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, पता नहीं क्या क्या करते रहता हूँ। और वो उसको कोई भी आके कुछ भी बोल देती है, फुसला देती है, कान में कुछ डाल देती है, बाबा फिसल जाते हैं, अरे ये यही है वो, यही है वो, हर बार हो रहा है, सोनिया के साथ भी हो रहा है। तो वो ही करते करते ने टाइम मिलता नहीं मेरे को, कि वो मोंटी छोड़ता नहीं मेरे को कुछ करने के लिए, कि मैं मेरे को थोड़ा टाइम मिले कि मैं भी किसी तरह आंख उठा के देखूं भाई कोई है कि नहीं, मैं भी देख लूं थोड़ा, मुझे भी कोई अच्छी लगे, मैं भी किसी से प्यार कर लूं। वो टाइम ही नहीं देता है, वो इतना बिजी रहता है वो आदमी, तो मैं उसको मौका ही नहीं मिलता है। बट आई थिंक दैट्स also the reason why this man is so attractive, because he's so focused and he's so sort of in his space, you know, that makes him so invincible, that he's not looking at anything, he just wants to do this one thing right, and he does it to her by like by hook or crook, by anything, he would just do it the way it has to be done, you know. I think that makes him so attractive. तो आप तो मतलब पूरे सीरीज में यू आर द स्ट्रॉन्ग मैन बिहाइंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बाबा, ऑफ निराला बाबा. एंड बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आप, उनको गाइड भी करते हैं, उनको रोकते भी हैं, मतलब यू इट्स अ वेरी नाइस फ्रेंडशिप दैट यू फॉलो. तो रियल लाइफ में आप फ्रेंड है या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बिल्कुल भोपा स्वामी कैरेक्टर में फिट हो जाए? आई मीन नॉट द नेगेटिव वन. नहीं नहीं, गन वन एक्चुअली मेरा निकालने का तो. आई थिंक भोपाल स्वामी वो भी एक काफी काफी सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो रहा है, कि यू नो कि बाबा निराला गलती करने से पहले भोपा समाधान लेके रेडी रहता है, कि मतलब ऐसे दोस्त चाहिए लाइफ में भोपा जैसे, जो मतलब बिल्कुल. यू हैव फ्रेंड्स बिफोर यू डू एनी काइंड ऑफ get into any kind of trouble or problem, and your friend दे आर Bhopa is देयर. there. So ऐसा मेरे तो मेरे and Baba Nirala is very lucky to have a friend like Bhopa. I have few friends who always, but Bhopa जैसा तो कोई है नहीं जो मेरा दिमाग पढ़ ले और मेरी गलती सुधार दे। तो मैं तो काफी बार गलती करके फंसा और मेरे दोस्त आके मुझे बचाने भी नहीं आए, वो यू नो ऐसे तो दोस्त होते हैं अपने लाइफ में, दोस्त अलग तरह के होते हैं। ऐसे दोस्त वो फिर फिक्शन राइटिंग में हो सकता है भोपा जैसे। हमारे लाइफ में दोस्त होता है कि यार वो खुश हो जाते हैं, अरे भाई किचन में गिर गया, बड़े मजे आए यार, तेरे को देखा तेरे कपड़े गंदे हो गए यार, अरे तेरी जीन्स फट गई, हाँ like क्या है तरीका है ऐसे, मतलब तो यू नो लाइक आवर फ्रेंड्स आर लाइक दैट, यू नो लाइक दे आर ऑलवेज लाइक they are your best friends, but they have fun on the side, seeing you slip and making those foolish mistakes. But Yeah. yeah, but that's life. But that's fiction. So yeah. तो आपने मूवीज बहुत सारी करी है एंड उनके मोस्टली टाइटल्स मैं देख रही थी, तो मतलब कमीने, फालतू, जबरिया जोड़ी, सनक एंड नाउ मतलब भोपा स्वामी एज कैरेक्टर, वो तो अपने आप में एक सीरीज का कैरेक्टर है. तो जी मतलब घर वाले कुछ बोलते नहीं है कि मतलब आपको ऐसे ही सनक दिखाने का मतलब मजा आ रहा है, या फिर कोई ढंग के रोल कर लो, कोई अच्छी या कोई नहीं, अच्छी बिल्कुल वो प्यारी movie कर लो. मेरे पिताजी जब जब तक थे तो वो उनको बड़ा फिल्मों का शौक था, तो वो काफी देखते थे और अपने आसपास उनके जितने भी दोस्त वगैरह सबको बताते थे कि यार ये देखो इसकी फिल्म आ रही है, इसकी फिल्म आ रही है। मेरी माँ थोड़ी हम लोग बंगाली हैं, तो मेरी माँ थोड़ी वो रविंद्रनाथ टैगोर और यू नो उनका थोड़ा टेस्ट अलग है, वो जया भादुरी और उनके लिए तो काफी उत्पल। शॉकिंग होगा, हाँ, मेरा बेटा भी उनको उस देखता दिन है. मैंने पहला एपिसोड दिखाया, जैसे ही पम्मी ने गाली दी और मैंने ऐसे देख रही हूँ क्या है ये,
ये क्या हो रहा है? पम्मी गाली दे रही है, तुम गाली दे रहे हो, छुरा भोंक रहे हो, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, यू नो? उनको तो मतलब पुरानी फ़िल्में और वो उस तरह की चीज़ें पसंद है, यू नो? हम्म। So, but my dad used to be very fond of watching all this. My mother watches, but she watches very, very little. She's not too much of fan of this kind of violence and all that rape and murder. आपका मैंने मूवी देखा था सनक, वो भी इट वाज वन कैरेक्टर दैट वाज लाइक यू जस्ट यू हैव दिस स्क्रीन प्रेजेंस दैट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ अटेंशन। उसमें Hmm. भी नेगेटिव टेररिस्ट बने हो आप, बिल्कुल गन वन के साथ आपका रिश्ता हो चुका है, बिल्कुल अच्छा वाला जैसे मुझे लगता Yeah, है। yeah. बट मतलब रोज सुन के आपको मजा आता है कि ये यार ये कुछ चैलेंजिंग लगेगा, ये सनक टाइप रोज जो आप कर रहे हो, नेगेटिव रोज या थोड़े चैलेंजिंग रोज, या Actually, फिर एक ऑल्टरनेट है कि चलो ठीक है वहां पे निकाल लेते हैं सारी भड़ास। वो एक्चुअली क्या है कि what happens is when I listen to a story, these characters are actually so interesting and well written, and there's so much. As an actor, when you're reading it, you know that this might just work. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. But these characters are so sometimes written in such a way you don't see these kind of people around you, or there is things which goes beyond. Like it's very imaginative. These kind of people like Sanak and Bhopa, like Saju in Sanak. Even Sanak, that character did really well, and a lot of people loved that character. That this terrorist who is so light-hearted and so soft-spoken, and but then there is something which might trigger him. And also Bhopa, which is also again a sort of a dark character, but kept. I try to keep the charm alive in these characters, which I think probably connects. I Because normally you would expect a villain to be like going gun blazing and pitching it high and being like robust and very masculine. या But I probably see I'm not that well bit like Bobby Deol, like I'm not a very very masculine guy. So what I use is I have my intelligence in my head where I put in and try imagine how I can what I can add to these characters, a little sort of charm or a sense of humor or play with the tonality that will attract the audience or probably work for the audience. And that's what probably happens. So I try use my imagination and put those things while I prepare for those parts. या सो लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी कैन इजीली से आपको अच्छा लगता है, तो Yeah, रियल लाइफ yeah. में ट्राई किया कभी? या रियल लाइफ में मैं करते रहता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है कई बार जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो एक लुक कंटिन्यूटी में ऐसा फँसता है कि वो फिर आप अब जैसे दाढ़ी फँस गई है अभी, अब ये साल भर की दाढ़ी रखनी पड़ेगी मेरे को। तो मैं ना कोई लड़की ना रोमांस हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, फ़िल्में भी नहीं मिल रही रोमांटिक, सब विलेन ही बना के रखा है। तो कई बार मैं ऐसे अच्छी शर्ट, चश्मा लगा के बैठ जाता हूँ कि कहीं कोई देख रहा हो तो सोच ले भाई ये सिर्फ़ बंदूक-वंदूक लेके ही घूमता है, तो पढ़ा-लिखा आदमी है भाई। तो वो मैं आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद लुक्स for every part. Obviously I sort of try and do something. Once I shaved off my head for a role, and sometimes I grow my beard, sometimes I have a mustache. And somehow, luckily, a lot of people have told me. I think 99% people who have told me, who have known me, they can't recognize me when I change my look. सो एनी रोल रिसेंटली कोई मूवी आपने देखी हो, आपको लगा कि यार ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता था? अ, मैंने अभी वो एक फ़िल्म आई थी मन मर्ज़ियाँ करके, अनुराग कश्यप या साहब की। उसमें आई थिंक अभिषेक बच्चन उनका जो रोल था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो रोल। वो मुझे लगता है कि मैं भी अगर करता तो मज़ेदार कर सकता था। वो मुझे रो द दैट अ मैन हू इज़ getting together with a woman who is already in love with someone else. It's या very, very, yeah, heartbreaking, and there is a lot of pathos which is there. And I thought Mr. Bachchan also did very well, and I would like to try something like. जैसे आपने चांदनी देखी है? हाँ बिल्कुल। चांदनी चांदनी में जैसे विनोद खन्ना का रोल था ना, जो आई मीन यस ऋषि कपूर साहब का रोल तो सब करना चाहेंगे, but मुझे लगा विनोद खन्ना साहब का रोल है ना, ही इज लाइक he's यस living with his mother, he doesn't have his love, and then he finds this इट्स वेरी woman. साइलेंट।
and very grounded. silent, and yeah, he's just going about with his life, and then he has no excitement in life left. Then suddenly he meets this woman, Chandni, and he falls in love with her, and then realizes that she's in love with someone else already. I mean, Yeah, these kind of roles is amazing. Like in Kamal Hassan in Sagar, you know, yeah. was very, very again interesting. All right, great. I'm sure, Chandan, you will get amazing. और खैर आपको जो भी role मिलेगा, you will just add this personal touch of yours and make it such adorable. कि अभी Thank you. I'm just amazed that Instagram पे आपको girls request कर रही हैं गाली देने के लिए. Like that is some level of success. So, Yeah. मतलब आई होप कि कोई आपको मिलके ये ना बोले और अच्छी अच्छी और हाँ बातें बोले. So all the जी. best. Thank you, I Payal. will Thank you so much. always be a great fan with all the work that you have done. जपनाम, आप मुझे ई टाइम्स पे देख रहे हैं, अगर आप एक बार ई टाइम्स में आ गए ना, तो यू टर्न तो ना है कोई। जपनाम। Wow, this is so good. Yeah. Thank you so much, Chandan. It was a Thank pleasure you. having you. Same. Thank you.